वीरेंद्र यादव जी आपका रुख करना चाहूंगी। इस समय धड़कनें बहुत तेज हो रही है, लेकिन अगर मैं आसान शब्दों में इस पूरे फेजेस वाइज जो ये लैंडिंग होनी है उसको आप समझा सके मेरे दर्शकों को, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और टेरर फेज की इस समय लगातार दीपक की बात कर रहे हैं। जी, तो जैसे अभी शशि बाबा जी ने ये बताया और प्रणय जी ने भी बताया कि करीब 800 किलोमीटर के आसपास की दूरी उस लोकेशन से बची हुई है जहां पर ये आखिरी में जाकर लैंड होगा और करीब करीब 3 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास में अभी फिलहाल इसकी लोकेशन है, अगर ऊंचाई की बात करें तो जो ये टेरर वाला जो आप सुन रहे हैं ये पूरे सीक्वेंस का टाइम फ्रेम है कि इस इतने पूरे टाइम में वो नीचे तक आकर लैंड हो जाएगा, ये हम होप कर रहे हैं। और इसका जो भी कमांड वगैरह है ये इसरो पहले से ही लैंडर में अपलोड कर चुका है और ये इस समय ये जो पूरा सीक्वेंस होगा ये उस जो भी कमांड जो भी प्रोग्रामिंग कोड उस पर अपलोड किए गए हैं उनके सारे वो अपने आप करेगा। और जैसे आप सभी लोग मेंशन कर रहे थे कि इसमें रिवर्स थ्रस्टर लगाए जाएंगे क्योंकि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी को रोकेंगे ब्रेक लगा, लेकिन जब ये चंद्रमा की सतह पर उतरने लगेगा तो यहाँ पर उसके रुकने के लिए अब उसको तो ग्रेविटी खींचे जा रही है, उसकी गति बहुत ज्यादा तेज है। आपने अभी सुना है कि मतलब 1600 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा तेजी से ये नीचे उतरेगा, तो उसकी गति बहुत ही ज्यादा है उसकी सेफ लैंडिंग के लिए। और इसलिए उसके रिवर्स थ्रस्टर को यूज करके जो अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर से उसकी गति को वो धीरे धीरे कम करता जाएगा और जब आखिरी में जब लैंड होने के कगार पे होगा तो आशा ये होगी कि ये करीब 2 मीटर या 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा हो। सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, हम कहते हैं ना जब गाड़ी सीखते हैं तो भाई गाड़ी चलाना सीखो तो ब्रेक लगाना भी सीखो। तो सबसे बड़ी बात लैंडिंग होती है। हम प्लेन की लैंडिंग देखते हैं उसमें भी हम पूरी तरह हिल जाते हैं। तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ ये लैंडिंग कितनी क्रूशल है, क्योंकि पर सेकंड में कई किलोमीटर चलता है विक्रम लैंड। देखिए क्रूशल तो है, अगर इसको ठीक से समझे तो आपको पता लग जाएगा इतना कठिन नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं एक मिनट आपके लिए रोक रहा हूँ, आपसे सवाल मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं अंजलि के पास। मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है और उनके साथ है प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी की पूरी प्रक्रिया के इंचार्ज है। हाँ जी। झरझर गिरा थे देख रानी पानी आज भी से दे तुर मुरझन। जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं, एमओएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और लगातार पहले दिन से ही बेंगलुरु में जिस दिन चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी उस दिन से इस पूरे मिशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है दीपक जी, जिसमें इसरो बेंगलुरु की ओर से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का ये सीधा प्रसारण यहाँ पर देखा जाएगा और तमाम जो साइंटिफिक सेक्रेटरीज का समूह है वो यहाँ इस समय सभागार में मौजूद है। तो छात्र भी यहाँ पर आए हुए हैं और एक खास कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जहाँ पर कुछ मंत्री अपनी साइंटिफिक सेक्रेटरीज के समूह के साथ बैठकर इस पूरी प्रक्रिया का मुआयना कर रहे हैं। सबके दिल में फिलहाल यही उम्मीद है, यही इच्छा है कि सेफ लैंडिंग हो और ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हो अमन? अगर हम साउथ पोल पर लैंड कर जाते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हालांकि जब वहाँ पहुंचे हमने बात करने की कोशिश की, उसकी बात है कि वो लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद मीडिया से उठाते होंगे और फिर अपनी बातें रखेंगे। लेकिन सभी की चेहरों पर इस समय आप देखेंगे जो उम्मीद है और जो गर्व है वो साफ झलकता है। यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक सेक्रेटरी मौजूद थे उनसे हमने झरझर गिरा थे देख रानी पानी तस्वीरें आपको हम लगातार यहाँ CSIR हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं जी। ठीक 29 मिनट बाकी है जब हमारी जो टेरर टाइम है वो शुरू हो जाएगा 5:45। बड़ी खबर भी आ रही है दीपक जी और उस बड़ी खबर का इंतजार इसी लैंडिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। चंद्रयान थोड़ी ही देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है और जोहान्सबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लैंडिंग को लाइव देखेंगे। देखिए वहां से प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ इसको लाइव देखेंगे। आज साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल कैबिनेट मंत्री उनके साथ होंगे और जहाँ हिंदुस्तान के तमाम कैबिनेट मंत्री और देखिए ये तो बड़े बड़े लोगों की बात हो गई दीपक, जो आम आदमी है जो गाँव में बैठा हुआ आदमी है वो भी इस समय अपने फोन पर
5:44 पर जो है ये टाइम शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही लाइव कवर है, मेरे को कुछ हाँ, समझ में नहीं आता है। प्रणय, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो टेरर टाइम है, इसमें किस किस तरह की एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि विक्रम को खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करना है इस पूरे 18 या 19 मिनट के अंदर जो है उसको इसरो से कोई भी कमांड नहीं मिलेगी, तो सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए या हाथ जोड़कर। बिल्कुल, निश्चित रूप से हर कोई जो है उन पैरामीटर्स को केवल मॉनिटर कर रहा होगा। दीपक जी, आप इस प्रक्रिया को समझें, इसके अंदर कमांड्स यानी किस समय के ऊपर, कितने सेकंड के ऊपर इसके अंदर कौन सा इंजन फायर होना है, ये 690 सेकंड करीब 11 मिनट का वक्त होगा, जबकि इसके अंदर इंजन फायर होने के बाद ये आगे बढ़ेगा और उस दौरान ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। उसके बाद अगले जितने भी चरण प्रणय, एक मिनट के लिए रुकूंगा। लाइव टेलीकास्ट इस वक्त इसरो से शुरू हो चुका है। 5:20 होने वाले हैं और 5:20 से इसका लाइव टेलीकास्ट होना था और ये लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। इसरो के कमांड सेंटर से ये लाइव टेलीकास्ट सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान की रिपोर्ट पर की जानकारी सुनना हम तब से दे रहे हैं जब से चंद्रयान का मिशन शुरू हुआ। बिल्कुल, और दीपक जी लगातार सबसे विस्तृत कवरेज तमाम एक्सपर्ट्स के साथ हर टेक्निकल पहलू को छूते हुए, तकनीक को समझते हुए इसरो कमांड सेंटर पर न्यूज संवाददाता मौजूद है। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको इसरो कमांड सेंटर के भीतर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम वैज्ञानिक जो है अपने अपने कंप्यूटर खोलकर टकटकी लगाकर सेकंड दर सेकंड नजर रखे हुए हैं इस मूवमेंट पर, क्योंकि ये लैंडिंग का सुरक्षित रूप से सफल होना आज में न सिर्फ 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, बल्कि इन तमाम वैज्ञानिकों के लिए जिनकी सालों की मेहनत इस पर लगी हुई है। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद से ही तमाम सीख लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये वैज्ञानिक, और दुआएं इनके साथ है, जिसे कहा जाए दीपक। और ये जो तस्वीर है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। प्रणय का दीपक क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, कितना शानदार शुभ मंगल चंद्रयान। शुभ है, मंगल है और चंद्रयान है, क्योंकि चंद्रयान के आने से क्या होगा, चंद्रयान के आने से स्पेस इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप होगी और साउथ पोल, जहां पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना है, वहां पर उतरने वाला भारत पहला देश बनेगा। यानी आपके पास ज्ञान है तो आप उसको बेच सकते हैं आप। और कई सारी कंपनी, जैसे जेफ बेजोस की जो कंपनी है अमेरिका से, ब्लू ओरिजिन, उसने तो इसरो से बात भी कर ली है कि हम स्पेस टूरिज्म आपके साथ करना चाहते हैं। और यही बात प्रणय के पास जाकर पूछते हैं। बिल्कुल, और भू राजनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत अहम हो जाती है आज की ये लैंडिंग, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी धसक जमाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत अगर आज सफल लैंडिंग कर लेता है तो एक ये बड़ी जीत होगी। प्रणय उपाध्याय। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ी जीत होगी, जो भारत को एक बड़ी अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर स्थापित करेगा। क्योंकि आज भारत चंद्रयान 3 की लैंडिंग करके साबित क्या करती है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साबित करती है कि भारत धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर किसी चीज को सॉफ्टली लैंड कर सकता है, यानी प्रिसाइजली लैंड कर सकता है। इसके अलावा उसके साथ वहां पर रोवर मूवमेंट को संचालित कर सकता है। यानी ये तो तमाम स्टेजेस हैं, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी एक नजर लगातार उस स्क्रीन के ऊपर है जहां के ऊपर तमाम अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं, और साथ ही जो 6 स्क्रीन आपको नजर आ रही है मिशन कंट्रोल रूम के अंदर, ये 6 स्क्रीन क्या बता रही हैं? ये बता रही है कि ऑर्बिटर के कैमरे से किस तरीके से चांद कैद हो रहा है। इसके अलावा इस लैंडर के ऊपर लगा हुआ कैमरा किस तरीके की तस्वीर कैप्चर कर रहा है, ये इसके अंदर नजर आ रहा है। साथ ही जो पूरा प्रोजेक्टाइल मूवमेंट रहने वाला है, यानी जहां से ये प्रक्रिया डिसेंट की शुरू होगी और जहां पे इसे लैंड करना है, उसका पूरा ग्राफ कैसे रहने वाला है, इसी ग्राफ को मैच किया जाएगा जब एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगी। इसके अलावा इस समय इसकी स्पीड कितनी है, कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, करीब 1600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस समय ये आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो इस समय डिस्प्ले किए जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर लगातार हर थोड़ी देर के अंदर आप सुनेंगे कि इस तरीके से अनाउंसमेंट होंगे। जो मिशन टीम है वो अपने अपने पैरामीटर्स के बारे में जानकारी शेयर करेगी, ये चीज नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल, ये स्टेप पूरा हुआ, अगला स्टेप शुरू हुआ। इस तरीके के अनाउंसमेंट हमें थोड़ी देर के अंदर सुनने को मिलेंगे। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे आगे की जो रो है उसके अंदर खुद इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ बैठे हुए हैं, उनके साथ जो दूसरे मिशन डायरेक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं, जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर के चीफ हैं वो बैठे हुए हैं, और इसके अलग अलग अपनी भूमिकाओं अपने रोल्स के अनुसार वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं दीपक जी। जी हाँ, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, मैंने कहा आपको गाड़ी में ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, गाड़ी चलाना आ गया। अब इतनी तेज गति से अगर हम चल रहे हैं, उसके बाद जब हमारा विक्रम लैंडर
ठीक है, एक बार कमेंट्री सुन लेते हैं, फिर प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे। माफी चाहूंगा प्रोफेसर साहब। Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan-3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdev Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan-3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away. कब से कब तक जो है चंद्रयान किस दिन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद चंद्रमा की चारों तरफ चक्कर लगाए, अब फाइनली लैंड करने वाला है विक्रम लैंडर 6:40 पर, और अभी मेरी घड़ी में 5:24 हो रहे हैं, यानी लगभग 20-21 मिनट और जब ये क्रूशियल टेरर टाइम शुरू हो जाएगा जिस पर लैंडिंग होगी। मैं सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, एक लाइन का सवाल, ये लैंडिंग इतनी क्रूशियल क्यों है और इतनी कठिन क्यों होती है? क्योंकि आप कई किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहे होते हैं, फिर कहीं जाकर आपको उतर जाना है, ये इतना चैलेंजिंग क्यों है प्रोफेसर साहब? जैसे ही अब ये तेज गति से जा रहा है ये यान, और यहाँ पर इसको रोकना है, ब्रेक लगाना है, तो उसका तरीका ये है कि इसके विपरीत डायरेक्शन से इसको धक्का लगे, इसीलिए यहाँ पर उसको यहाँ पर हाथ थ्रस्टर लगे हुए हैं, तो इसके विपरीत दिशा में इसको धकाएंगे। तो इसकी गति जब कम हो जाएगी तो जैसे जैसे गति कम होगी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बढ़ता चला जाएगा और ये प्रोफेसर साहब से हमारा शायद संपर्क टूट गया, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ये फेज 1 अब शुरू हो चुका है, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये फेज 1 आखिर क्या होता है। तो सचिन भामा जी, फेज 1 शुरू हो चुका है और देखिए धड़कनें बढ़ रही है। दीपक जी तो पहले से ही कह रहे हैं कि बुलेटिन करने से पहले ही इतनी घबराहट हो रही थी और अब धड़कनें मेरी भी बढ़ रही है। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। चंद्रयान 2 देखा है और बाद में जब वो हुआ था ना, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया कि उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया। इसलिए जो है जब उतर जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छे चांद पे गाने सुनाने वाला हूँ। बिल्कुल, लेकिन आप ये मत सुनाइएगा चांद सी महबूबा हो मेरी, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है दीपक जी, ये बिल्कुल ऐसी महबूबा कभी नहीं सोचता है। ऐसा मत बोलो, चांद जैसी महबूबा सोची जा सकती है क्योंकि ये हमारी कल्पनाओं में है। वैसे भी चांद हमारा मामा है, धरती हमारी माँ है, चांद मामा है और रक्षाबंधन आने वाला है। बाबा साहब पहले चरण के बारे में बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि इसको टेरर क्यों कहा जाता है, चरण अभी शुरू हुआ है। इस चरण में अभी तो जो चरण शुरू है उसमें एक्चुअली हम अपने सारे के सारे जितने भी हमारे उस पे सेंसर्स लगे हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इतना डिफिकल्ट क्यों है। जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो राम साहब आंसर कर रहे थे। आप समझिए कि अगर मैं किसी और जगह लैंड कर रहा होता तो मेरे पास थोड़ा वातावरण होता, मैं एक पैराशूट खोल लेता, कोई मेरे को रफ ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती, बड़े आराम से पॉसिबिलिटी थी कि धीरे धीरे मेरी स्पीड स्लो हो जाती। यहाँ कोई भी वातावरण नहीं, जीरो वातावरण। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे लिए है। और बहुत तेज चलती हुई गाड़ी को आप जब ब्रेक मारते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ी जरा इधर उधर सरकती है, और आप सोचें कि कितनी प्रिसाइज ब्रेक मारनी है कि हमारी गाड़ी कहीं पे भी सरके नहीं, हमें उसके कंट्रोल में रहना है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है वहां की लो ग्रेविटी। वो लो ग्रेविटी की वजह से अगर मैं उस पे जरा सा भी मिसमैच हुआ मेरे रेट्रो रॉकेट्स के फायर में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टॉपल कर जाए। और पिछली बार चंद्रयान 2 में अभी दीपक जी जो बात कह रहे थे कि मैं बड़ा परेशान था, वो यही हुआ कि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिसमैच हो गई। जो हमने उसका जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसके हिसाब से कंप्यूटर की कुछ कैलकुलेशंस गलत हुई और मिस फायर हुआ और वो टॉपल हो गया और जाकर के नीचे जाकर के टकराया। हमने उन्हीं सब गलतियों को सीख करके इस बार इसमें 3 नहीं रहता 4 बड़े चेंजेस किए। सबसे पहला, हमने अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बहुत अपग्रेड किया। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए सारा का सारा सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर में चलाना है। सो हमने अपग्रेड किया है उस सॉफ्टवेयर को। दूसरा, अगर मैं कैलकुलेट करूं वेट और छोड़ दूं उसको फुल स्पीड से चांद पे जाने के लिए, अपनी स्पीड से गिरने के लिए, तो जितना वो हमारे पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स से
1.5 गुना ज्यादा फोर्स झेल सकती हैं हमारी टांगे। ये हमने दूसरा उसमें चेंज किया है। तीसरा, जो विक्रम 2 लैंडर था हमारा, उसमें हमारे पास 5 जेट्स की कॉन्फ़िगरेशन थी, तो हमने इसमें से सेंट्रल वाला जेट निकाल दिया है और इस बार 4 जो हमारे इंजन हैं वो इस पे काम करने जा रहे हैं और वो चारों इंजन से हम बहुत अच्छा बैलेंस इसमें बना पाएंगे। सेंट्रल जेट निकालने का एक पर्पस और भी है, क्योंकि जब कोई चीज, यानी आज तक चाइना, जापान, रशिया, जिसने भी लैंड कराया, यूएसए, सबने सेंट्रल जेट सिस्टम से लैंड कराया। हम लोग अपना इंजन सेंटर से निकाल के 4 कॉन्फ़िगरेशन में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक जेट जब ज्यादा फोर्स डालता है तो बहुत सारी मिट्टी उड़ती है। चांद की जो मिट्टी है वो बिल्कुल पतली महीन मिट्टी है, जिसपे जरा सा फोर्स पड़ते ही बहुत कम पाउडर की तरह जो मैंने पढ़ा Exactly, और उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे से उतारना बड़ा मुश्किल है। सो हम बहुत कम चाहते थे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये आए, तो हमने वो हटाया और इसको बड़े आराम से हम डिसेंड करके ला रहे हैं। और 1.5 मीटर पर सेकंड से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं 3 मीटर पर सेकंड तक का इंपैक्ट लेने के लिए, क्योंकि चारों मोटर 800 न्यूटन की हैं। सो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और करीब 100 से ज्यादा बार इसकी लैंडिंग की प्रैक्टिस पृथ्वी पे की गई है। और सिंस हमारे को पृथ्वी पे चांद जैसी तो ग्रेविटी मिलती नहीं, तो हमने जब यहाँ पृथ्वी पे इसकी लैंडिंग की तो उस पे हीलियम का एक बैलून लगा के उसकी ग्रेविटी उतनी ही कम कर ली ताकि बैलून उसको ऊपर खींचता रहे। आप कह रहे हैं तो मैं दीपक जी को आज गारंटी कर रहा हूँ कि आज आपका दिल नहीं टूटेगा। मिट्टी का जिक्र हुआ है तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 170 ग्राम मिट्टी रूस जो है वो 1976 में लेकर आया था। जो अभी दीपक जी बता रहे हैं कि टेल्कम पाउडर जैसी मिट्टी है, अभी सचिन जी बता रहे हैं कि भाई ग्रेविटी नहीं है और उस चक्कर में वहां पर वातावरण नहीं है, इसके चलते ये लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तमाम साइंटिस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार वीरेंद्र यादव जी का जिक्र का रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, लगातार दीपक जी डरे हुए हैं, मैं डरी हुई और तमाम हिंदुस्तानी, देखिए हम कितनी भी पॉजिटिव बातें करें पर किसी कोने में ये डर भी है। आपका आकलन क्या कह रहा है? जैसे कि तैयारियां चंद्रयान 2 को देखकर सीखी गई हैं और चंद्रयान 3 में वो चेंजेस किए गए हैं। देखिए, ये हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं कि हम किसी पृथ्वी के बाहर जाके किसी भी दूसरे पिंड पर कोई चीज को लैंड कराने जा रहे हैं। हमने ऑर्बिटल मिशन पहले बहुत सारे किए हैं और जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। लैंडिंग का ये हमारा पहला अटेम्प्ट है और इससे पहले हम एक दफा कर चुके हैं जो उस टाइम पे असफल हो गया था। तो मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा सा जो डर है ये शायद उसी वजह से है, क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो और थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। ये उसी की वजह से है और मैं आशा करता हूँ और चलिए ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इसरो कमांड सेंटर का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। धड़कनें बढ़ी हुई है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। सीधे वहां का रुख और सुन लेते हैं एक बार। यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। ये सूचनाएं वहां से लगातार दी जा रही हैं और वहां से जो कमेंट्री आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और साथ ही ये जो हमारा वर्चुअल कमांड सेंटर है उसके जरिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जैसा कि बताया गया कि 55 लाख किलोमीटर की यात्रा अब तक चंद्रयान 3 ने की है और चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। और आप इसको इस तरह से देखिए कि अब कुछ ही मिनट बाकी है जब वो जिसको कह रहे हैं बार बार कि ये एक तरह से आतंक का समय शुरू होने वाला है, जिसमें कमांड इसरो के हाथ से जाएगा और इसरो के हाथ से ये कमांड सीधा एआई के हाथ में चला जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहां चला जाएगा।
ये चांद का जो साउथ पोल है ये वैज्ञानिकों के लिए अनजान इलाका है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर लैंड कराने को लेकर चंद्रयान 2 ने भी फेस की और चंद्रयान 3 के सामने भी वो चुनौती है जिसका फेस बस कुछ ही मिनट के बाद शुरू हो रहा है। सबसे कितना बज गया? वो है, आधा घंटा बचे भाई। Largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site, since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, अज्जू the भैया, Chandrayaan-3 mission will also ये जब यहाँ से provide उड़ी से तो बहुत बड़े बड़े invaluable मशीन data लगे to थे, the सब science मशीन कहाँ गए? community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration वही of टंगेगा ऊपर Chandrayaan-3 mission. तो गिरे कारण नहीं थी। ग्रेविटी खत्म हो जाता है ना चुंबक। मैं लाइव चल रहा हूँ यूट्यूब में। एक तो बॉक्स गिरी से चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के दिशा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान जो आग गिरा था तेने काम दे रहा सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और propulsion सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LTV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LTV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में खत्म ही नहीं होते हैं यार जात में। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। LiDAR यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का ज्ञान प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shaped payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid. An experimental shaped payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid
in the future study of potentially habitable exoplanets. Autonomous Landing Sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा। इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा।
आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रथ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सदी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the altitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक हाथिल मोरे ते थाम ले बैहा You're seeing live pictures on the right side of your screen, live images from the lander module as it conducts its burn, the moon coming closer and closer, now at an altitude of 31 kilometers.
We are now 130 kilometers, slowing our speed. Has been brought down. It is continuously coming down. And ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power dispatch. Following this, the throttle-able engine electronics module, the engine was switched on and lander was oriented to the favorable altitude. हाथ लमोरे थे थामले बहिया लगभग 1150 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जो कि बहुत ही मैजिक शुरुआत करी जा सकती है इतना सेकंड से। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप स्क्रीन पे देखकर कि लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी हम बात करें राइट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान-3 लैंडर इमेजर से the lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 74 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. अपनी आगे पूरा करते हुए तरफ से में लैंडर को ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को बढ़ा रहा है। अगर आप बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग And that descent is now underway. You can see that curve beginning as the module descends, now passing 26.5 kilometers in altitude and speeding up but slowing down as it prepares to land on the lunar surface. The lander will be oriented such that both the altimeter will be looking exactly towards the moon surface. At the end of this altitude voltage, height measurement update to navigation program will be given from the laser and power and altimeters. Currently, we are in the middle of the rough training phase. Welcome here to the launch pad. मनीला मोरे पैसा Kilometers in altitude, traveling 59 meters per second and increasing in speed. But that horizontal velocity you can see slowing down under 800 meters a second. Horizontally, some incredible lives from the lander module as we are now headed into a landing burn where the descents start. They are now in that rough braking. That burn should be completing here more shortly. And we are now 7 minutes away from touchdown. It is 713.5 kilometers. At the same time, you can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometers from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rotation. इस स्टेज के बाद हम जाएंगे towards altitude voltage.
where we will be expecting sensor updates from the laser and carbon altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 मीटर के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और कभू हंसाते रे कभू रोवाते रे आफ्टर लैंडर रोग हमें बरसता After the rough braking and altitude hold phase, we shall be having a fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. एक आदमी यहाँ था सारा दिन The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ जो करेक्ट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास जी हाँ हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर बेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है जो कि इस फेज के मोर लगती है तो लाइक नहीं लगभग 800 मीटर हो जाएगी मोर लाइक है तो लाइक नहीं अपन पास वहाँ शक्कर नहीं है वहाँ हवा का एमा चाय We में can hear from the mission operations team that is the sensor. एक घंटा करना है तभी छोड़ना in the है midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ जैसा कि आलू सिंह जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. शक्कर ले आवेगा जी हाँ वो गुरुत्वाकर्षण करने का भार फेंकबे ना लैंडर की ऊंचाई अब तो चंद्रमा हमारा की धरती सतह जल्दी से गिरे, लगभग 3 वहाँ नहीं किलोमीटर गिरे। से कम हो चुकी है मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see.
आँख नूर पे कोई हंसदी है। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत में बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हैवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप
अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का, अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को
जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी भोजन आ रहेगा कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए
इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. The satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO IR management, right from Chairman ISRO, Director URC and all the center directors and IR ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and then I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URC, my senior colleagues and my
team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us intentionally or unintentionally,
helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very welcome, and we are very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong, and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen couple of times issues, because I know very well, as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort, and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially in the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is the work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done.
बोले तेरा कंपनी को कंपनी पानी कहाँ से पड़ा था ये तो पूछा था अंदर मछली निकालती नहीं जल्दी मीडिया तो वही मिलती मार कर साफ ही ले मीडिया वाला होते काय रॉकेट के पीछे एक और रॉकेट लगे ते हा ये अपन वायुमंडल के ना सीमा से बाहर फेंके बर होते बहुत स्पीड से उसके बाद वहां से निकले के बाद फिर एक ठो ब्रस्ट कर ओकरा बाद पूरा लिक्विड इंजन से लिक्विड इंजन 100 रुपए नहीं क्या वो जो पूरा मुफ्ती में कहाँ फेंका था क्यों तो ऊपर में गुरुत्वाकर्षण कुछ समझ रखे ना ओकर बाद में तो मतलब बाहर में उसमें जगह नहीं लगे ऊपर में उसमें नानी बनते का तो यह जावत जावत जल्दी तो और ऊपर से आते ना तो जल्दी उससे देखो तो नहीं देखे इसका जी देखा था पहली बार देखा एक चीज का नाम है कैसे दिमाग लगा थे सारा वही तो खुद तो सॉफ्ट हो गया ते हैं मुझे ये समझ नहीं आता 200 की स्पीड में चलकर तो गाल ऐसे फेंका देते पर लाखों की स्पीड में चलाते तब हमको ये समझ नहीं आते और ऊपर वो अगर ऐसे मारे हो हम क्या करियो और रखा चाहिए वो लैंडर लेकर मोटर वो घूमी चारों तरफ वो चारों तरफ छानबीन करी वही रिपोर्ट दी वो खराब वराब नहीं हो कोई मशीन हमको वातावरण के बारे में पता हो गया ना ये देख रहे ना अब दोबारा भेज और वहाँ व्यक्ति भेजिए अच्छा दूसरा जगह में आ भी रही हो कपड़ा भाई भाई बहन बहन की अच्छा तो चलो अभी तक नहीं देख लाइव दिखा ना सामने लग लग के सामने तभी नीचे आते हैं पता है उस समय तक काम से ही हो
वही लाइट सैटेलाइट है कहीं वजनदार हुई नहीं मशीन ऊपर का आदमी को दिखा ऊपर का आदमी को स्पेस वाला में हाँ अभी तक हिंदुस्तान कोई नहीं गया उसमें गेरी से वापस आता मरेगा अच्छा उठी में रात में ओमा के एक तो चादर ना निकल गेरी से अब वही चादर देख वो लगे रही तो कुछ नहीं वही निकले ना तो वो जलत जलत अंदर पूरा जला मूल खोलवे बंद करवे नाक बंद रही तो पानी में तैरवे खोल दे मर जाओ थोका था टटकी उट्टी करा सकते तो सब लटके रहा था उतरे में पूरा लिक्विड होने चाहिए मूत्र तो पीते रहा और तो खाना जाते खाना खत्म नहीं है स्टेशन वो ही स्टेशन है चांद में मतलब ऑक्सीजन नहीं है चांद में ऑक्सीजन नहीं तेरे के जन स्पेस से कूदे अब देखे इसके नहीं देखे मालूम मैं हूँ गोदरेज एयरवेस्ट अपनी अमेजिंग खुशबू से इनकी हर उसको आवाज है क्योंकि मेरी क्लेवर टेक्नोलॉजी ने एक उसको आवाज जैसी खुशबू साथ देता है गोदरेज एयर का फ्रेग्रेंसेस बस तुम पढ़ो आपने क्या है I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier.
स्प्रे का है आज स्प्रे अच्छा तो आप लोग करते रहे क्या काशी करते रहे तो मगर लिखा था वही अंदर में मशीन कहाँ है मशीन और सेकंड किलोमीटर दिक्कत भी नहीं ¿Cómo que la vida yo tercer lugar? Se lo ocupa un gran lado. A mí no. और तो बीच वाला हां शॉर्ट वो भी बड़े लाग ये आ रहे हमारे बीमारी ग्रीन क्लियर करा नहीं किस हमारे जाने
a few problems. Hang on. Yeah. All right, good job. I told him you were. Okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there it is, all but about 5 inches. Okay. Tell you, I like to run up here. Hey, boys. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. I'll give you a demonstration here, Joe. Roger. Right on here, Joe. Spectacular demonstration. Oh, well, enough of that. What was that a demonstration of, by the way? It started out to be of gravity and it wound up being of centrifugal force, I think. You know that whole program. खाना जब अपनों के लिए बनता है पूरे दिल से बनता है इसीलिए मैगी मसाला है मैजिक जिसमें लौंग इलायची जायफल जैसे 10 चुनिंदा मसालों को भून के मिला के बना वो मैजिक जो सब्जी रेडी होते ही गले अच्छे से मिले और कमाल तुम रोज ही कहती हो आप रोज ही करती हो from Nestle. Hey everyone, so some of you asked me how my skin looks with all the traveling, street food and stuff like this. It looks amazing because I got this. Olay's bioavailable niacinamide penetrates better for visibly clearer and more radiant skin. Olay niacinamide at rupees 8.99. That's one small step for man, one giant leap for mankind. In the beginning, God created the heaven and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Hey, we had a problem here. Say again, please. Oh, yes, we had a problem. It's been a long way. We're here. Okay, are you guys ready? Here we go. It might sound corny, but the view is really out of this world. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Our single space project in this period will be more impressive to mankind or more important to the long-range exploration of space than other so difficult or expensive to accomplish. Okay, congratulations. Oh, you won't believe it. Now, there goes the picture. Caught with my hammer and it just popped right off. John Deere Houston, we've been working on fix for the missing sensor. I think it'll stay. Looks like the fix is working so far. Beautiful. Look at that tree.
तर मोबाईल बंद कर हो गेला और दूसरा रन कर We're 2 hours and 46 minutes into this EVA. Jack Schmidt taking a rake sample. Heart rate's running in the 90s. What did I tell you? It didn't done any right. There's a couple. Keep going. Yeah, you got about 4 rocks, about 2 inches and smaller. Okay, right there. Get the soil and press. I'll get back to you within 3 minutes. 3 minutes. Okay, you got it? Then forget the soil. Forget the soil. Watch us move in 3 minutes. So let's go. Get the soil, guys. Don't forget the soil. Get the soil. Yeah, we want it. I'm sorry. I thought you said skip it. Got your bag? Yep. One Scoop Schmidt, they call me. That's good. That's bag 508. Got that. Well, we ought to start moving out of here. Yep, let's go. The basic major objectives are to follow on to the previous flights, especially Apollo 15 and especially Apollo 16, and try and put together the works and the words and the paragraphs of all our lunar exploration. We hope that, geologically speaking, we'll be able to uncover rock types and different types of geologic finds. नया बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल। इसकी फ्रेश खुशबू मिले चुनिंदा कोकोनट से और बनाए इसे 100% शुद्ध बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल। Experience a new height of comfort. This is Bifins. जे तो कबला भाषा बिट्टू यादव सीजी वीडियो मेरे मोड़ से आ गया तो मंगे ना इसमें मंगे ये क्या कर का झरझर गिरा पे देख रंग पानी
छलकत हमरो जवनिया ए राजा तुझसे कहीं के बनिया हो आगे तो मोबाइल में देखो तो Back at LZ1, this is the first time that we have performed a elite system on a crew mission. Coming up next will be second engine cutoff or SECO, and that's where after that engine cuts off, second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate. Stage 2 is in terminal guidance. We're expecting SECO to occur in about 20 seconds. Copy, share. Commander Peggy Whitson continuing to call out the abort modes. नहीं है उन्होंने पूरा पूरा फेक कपड़ा पहन के टट्टी बुट्टी के आसपास में फिर निशान सा लाइट डाल के बैक को मारना पड़ा है बैक को All right, on-time shutdown of that second engine. Also confirming that the launch escape system is now disarmed. All right, and there's that call out. We can confirm good orbital insertion. Copy, orbital insertion. 27,000 किलोमीटर We can see the crew playing with their harnesses now that they are in zero G, which I think we just got a view of our zero G stuffy. और डायरेक्ट नहीं जा सकता ऐसे नहीं सुई से घूमना जरूरी The crew is having fun already. Right after liftoff, I think we heard a laugh coming from Commander Peggy Whitson, which, being a NASA legend and one of the most decorated astronauts of all time, it's amazing to hear that even a space veteran as she still has fun at liftoff. The next event that we have coming up at just around T+12 minutes is Dragon separation. That's where the Dragon spacecraft and trunk, so collectively referred to as the Dragon spacecraft, will separate from the second stage. After that separation, we will begin to deploy the nose cone, which exposes the forward bulkhead thrusters as well as the forward hatch. That forward hatch is what the capsule utilizes to autonomously dock to the International Space Station. Going from left to right, everyone's having fun, clearly. We have mission specialist Rayana Barnawi. To the right of her is pilot John Schaffner. Then we have Commander Peggy Whitson. And on the far right, mission specialist Ali Al-Karni.
We can see that the excess strap on some of the harnesses, as well as the writing utensil for their tablets, they continue to play around with as they are experiencing zero G for the first time. At least we can say that for 3 of the 4 astronauts on board today. Now we are standing by for Dragon separation, which is expected to occur in the next few seconds.